ओम शांति। ओम शांति। प्रोग्राम अंत होते होते अंदर में जा रहा है या क्या हो रहा है? लीकेज तो नहीं हो रही? नहीं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? सभी एक्टिव हैं? ओके, चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी का जो सत्र है वो है, उसका जो टॉपिक है वो है अ विजन ऑफ डिवाइन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। मैं सभी गेस्ट को, इस सत्र के जो भी गेस्ट हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ बीके मुकुल जी, कोर ग्रुप मेंबर ऑफ स्पार्क विंग। आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी ज़ोरदार तालियों से उनका अभिनंदन तो करेंगे। साथ ही साथ आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं इस सेशन के, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर आनंद पिल्लई जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इन लीडरशिप मैटर्स, IIN से। तो जैसा कि हम सब, हमारी यहाँ की प्रथा है, हम हर कार्य की शुरुआत प्रभु की स्मृति से करते हैं और उस परमात्मा को हम अपने इस सेशन में आमंत्रित करते हैं ताकि हम कुछ नई लर्निंग, नया एक्सपीरियंस इस सेशन से भी करें। तो चलिए 2 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। ये 2 मिनट की साइलेंस हम सभी को अंदर से शक्ति देती हैं। 2 मिनट की साइलेंस मन को शांत कर देती और ये 2 मिनट की साइलेंस हमें आगे के लिए प्लानिंग भी दे देती हैं। इस 2 मिनट की साइलेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए आज के सत्र का हम आरंभ करते हैं और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी स्टेज गेस्ट का स्वागत पुष्पगुच्छों से करेंगे। तो सिस्टर स्टेज पर सर्वप्रथम स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर आनंद पिल्लई जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर लीडरशिप मैटर्स IIN से। तो एकता बहन हमारे गेस्ट को आज स्वागत करते हुए, साथ ही में हमारे साथ बीके मुकुल जी, कोर ग्रुप मेंबर ऑफ स्पार्क विंग, आपका भी हम पुष्पों से स्वागत करते हैं। कहते हैं परमात्मा की वो सृष्टि, और उस सृष्टि के अंदर क्या बढ़िया गवर्नेंस होगी, वो दैवी गवर्नेंस क्या होगी, उसका विजन हमारे पास क्या है, उसका हम आज डिस्कशन करने यहाँ बैठे हैं।
तो सर्वप्रथम मैं भ्राता मुकुल जी से अनुरोध करूंगी, आपको थोड़ा सा मैं मुकुल जी से परिचय कराना चाहूँगी। मुकुल जी 31 साल से ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड हैं और राजयोग को प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में। आप जनरल मैनेजर रहे हैं स्कोडा ऑटो में और मैकेनिकल इंजीनियर आप बाय प्रोफेशन हैं। आपने पीएचडी किया है साइकोलॉजी में और फिलहाल आप रिसर्च कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल इमेजिनरी ऑन स्किल एनहांसमेंट। सो ब्रदर, आप क्या समझते हैं कि परमात्मा की वो ऐसी सृष्टि, हाँ, जो कहते हैं स्वर्णिम भारत, हम जिसकी कल से चर्चा कर रहे हैं और आज सुबह भी हमने आज सुबह से भी हमने जिसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो सृष्टि का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस क्या होगा? भ्राता मुकुल जी। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। इसलिए खास प्रणाम कि आपके एंड्योरेंस मानना पड़ेगा। 3 घंटा क्लास सेशन हो रहा है, थ्योरी सेशंस हो रही है, आप सुन रहे हैं। हाँ, तो ये कमाल है। मतलब इस प्रकार के बच्चों के सेशंस 40-45 मिनट्स का एक पीरियड होते हैं, उसके बाद उनको एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। आपको अभी ब्रेक मिली है थोड़ा देर पहले, लेकिन बिना ब्रेक का भी आप कितना सुंदर ज्ञानग्राही रूप से बैठे हैं, इसीलिए आपको फिर से प्रणाम। डिवाइन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, ये अर्थात अगर हम देखें एक बहुत सुंदर विश्व का कॉन्सेप्ट जो है, और उसको वास्तविकता करने के लिए उसकी गवर्नेंस किस प्रकार का होनी चाहिए, किस फंडामेंटल बेसिस से होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ थॉट्स हम आपके सामने रखेंगे। आई वुड टेक अबाउट 10 to 12 minutes, होप दैट इज फाइन। हाँ, ओके। सो डिवाइन गवर्नेंस अगर हम कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड गवर्नेंस, क्योंकि डिवाइन शब्द जब हम ऐड करते हैं, डिविनिटी के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कुछ चर्चेस हैं डिविनिटी के नाम से, डिविनिटी कल्चर भी है। तो दिव्यता, इट्स अ हिंदी टर्म, बट उसके अंग्रेजी डिवाइन है। तो बट बेसिकली गुड गवर्नेंस का अगर हम बात करते हैं तो उसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है जहाँ प्रगति है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस हो, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस हो, जो सस्टेन कर सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जहाँ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेते हैं, जहाँ समाज के कोई भी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए पार्टनरशिप करके वो आगे बढ़ते हैं। यानी समस्या जिनका है और सरकार दोनों पार्टनरशिप, ये सरकार का काम है मुझे संभालना, इस प्रकार के एक दूसरे को बॉल पासिंग गेम नहीं करते हैं। तो ये दिस इज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑल्सो अडाप्टिंग टू चेंजिंग नीड्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ क्राइसिस, बिकॉज ऑफ नेचुरल क्राइसिस, किसी भी प्रकार के क्राइसिस हो, एंड उसके साथ साथ इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी, प्रामाणिकता, कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी, सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, बट इन जनरल ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। एंड फाइनली ऑफ कोर्स दिस मीन्स दैट द गवर्नेंस टीम एंड उसका लाभ बेनिफिशियरीज, they all share a common vision towards which they are motivated. Now, अगर हम इस चीज को देखते हैं, इसको अकम्प्लिश करने के विविध तरीके हैं, और हम सारे विश्व परिवार को अगर देखते हैं, अलग अलग देशों को देखते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि गवर्नेंस के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पावर को ऐसे मॉडल यूज करके भी देश को बहुत सुंदर, समृद्धि संपन्न बनाया गया है, परंतु उन देशों में प्रसन्नता नहीं है, मुस्कान आपको नहीं मिलेगा। हम उस देशों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट आप जानते हैं जहाँ पे सरकार जो कहेगा डंडा राम करके लोगों को मानना ही पड़ेगा, वो मुंह नहीं खोल सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के देश हैं आज विश्व में। वहाँ पे वस्तुवाद के समृद्धि तो बेशक है, डेफिनेटली है, नो डाउट अबाउट दैट। हमारे देश से कई गुना अधिक है वस्तुवाद की समृद्धि, परंतु खुशी नहीं है। मैं उन देशों के कुछ सज्जनों से मिले थे जर्मनी में कुछ ट्रेनिंग के दौरान। हमने पूछा, आप इतने सुंदर हैं, आपके शक्ल, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं?
आपका शक्ल में, किसी के शक्ल में मुस्कान नहीं है, ऐसा क्यों है? हमने हंस के पूछा। 2 महिलाएं थी, एक पुरुष थे। वैसे ही गंभीरता से सभी हमारे तरफ देखने लगे। मैं सोचा कहीं मैं गलत तो बोल नहीं दिया हूँ। देन दे सेड, नहीं, हमारे कल्चर में मुस्कुराना मना है, हमको सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है, कमाना है, थक जाने से दारू पीना है, सो जाना है, फिर से काम करना है, ये हमारी जीवन शैली है। अब सोचिए, लेकिन उनके वहां संपन्नता है, खुशी नहीं है। आत्मा मरी हुई है, जैसा कि सिकुड़ी हुई है, प्रसन्नता नहीं है, बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। आप एक आदमी को बांध के रख के उनको अच्छे अच्छे चीज खिलाइए तो वो प्रसन्न हो सकता है क्या? राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, राइट टू एक्सपीरियंस नहीं है। अब दूसरा, और इस प्रकार के, क्या इसकी जरूरत है पावर कोहेसिव मॉडल के? कुछ हद तक, कुछ समय, कुछ परिस्थिति के अनुसार शायद है, कुछ समय के लिए, लेकिन इससे कोई स्वर्णिम भारत बन नहीं सकता। इसके दूसरा एक्सट्रीम में है जो बहुत सुंदर मॉडल है, वो है प्रो सोशल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मॉडल। प्रो सोशल अर्थात हम समाज के लिए सोचे। भारतीय सेना में जैसे बताया जाता है, 3 मंत्र आप जानते हैं, भारतीय फौजी ऑफिसर को यह सिखाया जाता है। पहला मंत्र है देश। सबसे पहले अगर आपको चुनना पड़े क्या करना है मुझे, तो पहला मंत्र है देश को बचाना है। दूसरा मंत्र है हमारे साथियों को बचाना है, भारतवासी नहीं, देश में भारतवासी आ गए, साथी मतलब लड़ने वाले जो जवान हैं उनको बचाना है। तीसरा है मैं, मेरा नंबर तीसरा में आएगा। तो पहला कौन है? देश है। तो ये क्लैरिटी है। और दिस इज अ प्रो सोशल एक्टिविटी, जहां हम समाज को, जहां हम दूसरे को, जहां हम कम्युनिटी को, जहां हम देश को आगे रख रहे हैं। ये एक माइंडसेट है और उसके आधार से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना, सरकार को ब्लेम करना नहीं, परंतु सरकार कौन है? हमारे के ही एक समष्टि है। A percentage of the common people have been assembled together to represent the problems of the country and maybe to allocate funds accordingly, जो भी है। परंतु हम उस ग्रुप को केवल ब्लेम करने से नहीं होगा। सो दिस इज अ प्रो सोशल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, जो सर भी बहुत स्पष्ट करेंगे उनकी बातों में। सो इट्स अ कंटिन्यूम विच इज देयर इन 2 एक्सट्रीम्स। अब सवाल उठता है कि कौन से तरीके आजमाना चाहिए, या लॉन्ग टर्म में देश का परिवर्तन जो हम चाहते हैं, उस डिवाइन गवर्नेंस कौन सी होंगी, ये प्रश्न है। और इसका समाधान है वैल्यू बेस्ड समाज जो है, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस। लेकिन हम आपको एक बात थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे, अंग्रेजी में वैल्यू और हिंदी में दिव्य गुण का बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जो मॉरल वैल्यूज कहते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो दिव्य गुण है, उसमें से कई चीजें। परंतु वैल्यूज शब्द बहुत डेंजरस है, क्योंकि वैल्यूज मीन्स समथिंग एल्स। वैल्यूज मीन्स हमारे प्रेफरेंस, वैल्यूज मीन्स हमारे प्रायोरिटी, विच मीन्स मैं गॉर्जियस ड्रेस करना पसंद करता हूं, मैं रेड ड्रेस, मैं डार्क कलर के ड्रेस पहनना पसंद करता हूं, मैं ज्वेलरी पहनना पसंद करता हूं। पीपल विल कॉल कि मुकुल वैल्यूज गॉर्जियस ड्रेसिंग, बट इससे कोई दिव्यता कनेक्टेड नहीं है। इट इज माई प्रेफरेंस, इट्स माई वैल्यू सिस्टम, राइट? आई वैल्यू दिस। द अदर कुड बी बहुत लाइट ड्रेस वो करते हैं, इट इज हीज और हर वैल्यू सिस्टम। बट यहां पे दिव्य गुण एड्रेस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए व्हेन यू डू अ नेट सर्च, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड वर्च्यूज। हम बीकेस कई बार ये दोनों शब्द को बराबरी से इस्तेमाल करते हैं। दिव्य गुण उसका ही अंग्रेजी कर देते हैं वैल्यूज, क्योंकि अंग्रेजी में बुक वैल्यूज का है, परंतु उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एंड वर्च्यूज आर पॉजिटिव यूनिवर्सल क्वालिटीज, जो 36 गुण के लिस्ट लगे हुए हैं हॉल से बाहर होके आप देख सकते हैं, दोज आर यूनिवर्सल क्वालिटीज। एंड डिवाइन गवर्नेंस लाने के लिए ये जो 36 डिवाइन वर्च्यूज हैं, उसमें से हर इंसान को 80% ऑफ दोज वर्च्यूज का कॉम्पिटेंस लेवल होना चाहिए। अगर किसी को इवेल्युएट किया जाए, रेटिंग किया जाए, इफ समबडी इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ऑन दिस 36 कॉम्पिटेंसीज जिसको हम वर्च्यूज कहते हैं, दिव्य गुण कहते हैं,
a divine governance team need to have, each of the individual need to have 80% of these competencies on a 100% scale on these 36 qualities, तो ही ये divine जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो सकता है. So basically the transformation, the governance starts from who, what does governance means? The governance are from individuals, their thoughts, their cognition. So it is inside out which has to happen. And it's a reflection. A team of people, a team of thinkers, their reflections are getting into planning board, that is getting transferred into execution, action, and uska benefit या consequences the majority is reaping. Now if the thought process is refined, जो हमारी दीदियाँ और कई distinguished guests express किए हैं, that is the way in which divine governance can come. So basically then the thought process, the cognition process is generated through consciousness, and therefore we need to understand the consciousness model. हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में देह और चेतना यानी आत्मा को अलग माना जाता है, और आज आप लोग जो पहली बार यहाँ आए हैं, आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स भी हुई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कॉन्शियसनेस के 3 डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं. एक है थॉट्स जनरेट करने की डिपार्टमेंट जो है, दूसरा है इंटेलेक्ट, निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बेसिस में हम कर्म करते हैं, एंड देन वी रीप द रिजल्ट्स, and the results interact and they form impressions, and these impressions are called as sanskars, and we are what our habits are actually. In Indian philosophy it is believed, and Brahma Kumari strongly believe the fact that we are originally very pure, very good, unlike Sigmund Freud, who felt, who believed, basis his research at that point of time, that in general the ego, super ego concept जो है आप कई जानते होंगे, परंतु भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि आत्मा का स्वधर्म जो है वो बहुत सुंदर है, एंड दीज आर द यूनिक क्वालिटीज, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ये हमारे इनेट क्वालिटी है, और हम जो भी करते हैं इस चीज़ के अभिव्यक्ति के कारण करते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं, right? So therefore what had happened actually is, it's the mind, intellect, sanskar, they interact with each other through a playground called karma, and when we start playing in the ground called karma, they interact with each other. There is some standard interactions जो आप arrows से देख रहे हैं, there are some cross introductions which happen, and basis which we form sanskars, and at times our intellect get deteriorated. जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैसे हमारे साफ इंटेलेक्ट जो है वो ग्रेजुअली पोल्यूटेड होते जाती है, और जिसके कारण ये जो विकार है, जेलसी है, एंगर है, ईगो है, इस प्रकार के रिएक्शंस जागृत होते हैं, एंड दिस कंटिन्यूअसली क्रिएट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरलिंग ट्रेंड, और हमारे एनर्जी लेवल जो है, हमारी प्रसन्नता जो है, हमारी शारीरिक स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है, सारा एनर्जी डाउन होता जाता है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली फॉर्म्स इनटू अ हैबिट, and it goes into a sanskar. Just you can see the image, the GIF picture of the brain functioning. Whatever we do repeatedly, it forms a neuronal network, and the brain gets trained. We are talking about neuro leadership these days. So it is forming the habit in a particular way, how you need to react. If you can train yourself by repeatedly doing those acts, then the brain gets trained into a particular form. And it is something like this. It is like a road, a trail which is formed by repeatedly moving on that path. There was a green field and you walked through the path and the path is formed. Exactly this way the habits get formed. And once a strong positive habit gets formed, then the consequences become very positive. So, for a divine governance, there is a need to have inculcation of divine habits. And
where is the starting point? You know, every machinery has a setting called restore factory setting. आप सभी देखे हैं, अपने मोबाइल्स में भी होते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, कस्टमाइजेशन है, लेकिन एक बटन लास्ट में दी होती है रेस्टोर फैक्ट्री सेटिंग. So restore factory setting is a bit of contemplation, is a bit of reflection. We call it as spirituality, in which we are able to restore back our original innate divine qualities. And this we believe is possible through connecting with that Supreme, because us Param Shakti is not involved into this day-to-day activity, and he is the super source of the charge. And therefore, once we connect to them, and our intellect is again restored back, which is called as Divya Buddhi, the intellect becomes divine. And then our actions turns the world into a place which is divine. और हम सभी जस्ट सोचिए, सारे भारत में जितने लोग हैं, एवरीबॉडी अगर जिम्मेवारी उठा ले, जस्ट जिम्मेवार बन जाए, they are just responsible for their own family and maybe 1 or 2 persons in and around them. Not only persons, even the animals and the birds around them. जस्ट सोचिए भारत में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ का होगा. एक सोच बदली करना है, मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ फायदा हो, ये सोच थोड़ा देर के लिए पार्क कर दे हम, और जस्ट हम क्या दे सकते हैं, जस्ट ये सोच करें, और भारत में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा आप सोच सकते हैं, जस्ट विजुअलाइज करें. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन गवर्नेंस विच spirituality can help in bring transformation, and probably there is no other way to do it. And this is a very easy, effective, and very, very short, in a very short time it can be done. Om Shanti. Thank you. थैंक यू ब्रदर मुकुल. आपने बहुत ही इजी वे में अगर शॉर्ट में कहें तो सेल्फ सोवर्निटी जितनी होगी उतनी ही विश्व में अच्छी वाइब्रेशंस हम फैला सकते हैं. या ऐसा भी कहें कि अगर हम आज की प्रकृति और मानव को देखें और आज से अगर सिर्फ 100 साल पीछे भी चले जाएं, मानव और प्रकृति कैसे थे, आज कैसे हैं. सो वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ दोनों को हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकलकेट करना है. तभी हम अपनी वो डिवाइन गवर्नेंस या जो कहें कि स्वर्णिम भारत बना करके उस पर हम बहुत खुशी से और समृद्धि से रह सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ दिस सेशन, मिस्टर आनंद पिल्लई जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इन लीडरशिप मैटर्स IINC, and he is Chief in Transformation and Strategy Officer with 5 consulting firms, graduate from Institute of Science in Bangalore, Chief Learning Officer at Reliance Industries, and senior role in HCL Technologies. Brother, we would like to request you to please share your divine wisdom on Thank that you. topic. Mukul, I think, set the platform very well for divine governance and administration. I want to come down to earth, to ourselves. Because you cannot govern others if you do not govern yourself. You cannot administer effectively if you cannot lead yourself. There is no way you can lead others if you cannot lead within. So my focus on governance is leading from within. And that will break it down. How do you lead from within? For you to lead from within, you will have to have self-discovery. You need to know who you are. You know, one of the books that really impacted my life is the Bible. And in that, one statement hit me hard. The God who created us, made us, it is said in Psalm 139, He has made us fearfully and wonderful. Nobody has utilized the full potential of us. Didi was mentioning that even Albert Einstein used only about 7% of the intellect. Are you discovering all the infinite potential that is there in you? So we'll see that.
The second one is, once you discover yourself, you need to develop yourself. That is your responsibility. Having developed yourself, you need to get into self-actualization. And that's the model that we have for governance. First starts with self-discovery, self-development, and then self-actualization. Let me walk you through this process. Number one, discover yourself. For discovering yourself, I will give you 5 questions which you can ask. What are the 5 questions? The 5 questions are, and this you can apply to Bill Gates, you can apply it to Steve Jobs, anybody. What is your yearning? What is your rapid learning? What is your flow? What is the glimpses of excellence? And what is your satisfaction? Let me give you the details of each one of them. The first one, what is your yearning? Each one of you, take a sheet of paper and write down what are the things that you yearn to do. What are the kind of activities that you are naturally drawn? You may get out a set of 10 activities. You may like painting. You may like listening to music. You may like doing something with mechanical things. What is your yearning? What is your inner desire? That's a number one step. I love to make cardboard projects and love to use old parts of any mechanical object to make new things. Very good. We will go in the process, yes? Drawing, writing emails to others, or making designs of Very good. I wish we could have the opportunity for all of us, but these two students are really bowling us all over. So you make a list of 10. So take the number one question, what kind of activities are you naturally drawn? You will get about 10. To make the exercise of discovery yourself simple. Then you go to the next one. In all these activities, 10 activities, what kind of activities do you seem to pick up quickly? We'll do this at the end of it, okay? Out of the 10, what are the activities that you seem to pick up very quickly with little learning, rapid learning, with little reading, with little interaction? You may come out with a list of about 8 for want of a simple example. 2, you may find it difficult to learn. You are yearning to do it, but you may find it difficult to learn. Let us say 8. Out of that 8, filter the next question. What kind of activities did the steps come to you automatically? As if it was hardwired in your brain. As if it is there in your DNA. That is it. Just, you don't have to read a book. You don't have to consult anybody. I don't know if you have come across devices. Sometimes, I'm struggling with a particular device and I'm saying, how do I make it work? Let me check the manual. And my son comes along and says, Papa, that's how it works. Hey, boss, how did you do it? It is natural. This is the flow. And in our children and in us, out of that 8, first 10, then 8, then 6. The flow, the difference between step number 3 and step number 2 is the fact that in step number 2, you need to learn. You rapidly learn. In step number 3, it comes to you automatically from within. From there, from that 6, you go into the next filtration. In all these activities, during what activities have you had moments of subconscious excellence where you thought, wow, how did I do that? Or did I do that? Did I do that? Then you say, out of all these 6 things, not all of them are excellent. There would be possibly about 4. That which you are really excellent, where not only you are surprising yourself, you are surprising the world. From there, you filter the final question. And that final question will be, during what activities give you a kick either while doing them or immediately after finishing them, you think, wow, when can I do that again? That is your
inner self, and that is your signature. The Japanese call it the ikigai. It is a combination of what you love to do, what the world needs, what you are paid for, and the things that you are good at. Japanese put it in 4, I put it in 5, but the core is that which you are excellent in, that which you find satisfaction in, that which is your passion. That is the discovery of yourself. Once you have discovered yourself, you are not going to stay there. You have to reinvent yourself. And how do you reinvent yourself? I'll give you a simple model. Whatever you are doing on a day-to-day basis, put 60% of that in your comfort zone. Things that you usually do, things that you like doing, things that you are happy doing, only 60%. But 40% of your day-to-day activities, you need to be doing that which is risky, that which is difficult to do. Otherwise, children will not grow. If you're doing only that which you like doing, you'll never grow. That which is a higher duty, that which you are afraid of, that which you are inexperienced or is adventurous. Once you do that, you need to revisit this entire activities once in 18 to 36 months, and I want to ask you the question. What happens to some of those activities in the courage zone after 18 to 36 months? Yeah, it will become the courage zone. Right, it will become the courage zone. You will get used to it. So that which was one time difficult will now become easy. I am applying what is known as the Feynman's lectures principle. Any of you know Feynman's lectures principle? Teach a difficult concept to children, and if they understand, everybody will understand. As simple as that. So that's what I am doing. Now let's go forward, reinventing yourself. So we all know the 60-40 principle. Constantly ask yourself the question, what is it that I'm doing today that I was afraid of earlier? What is it that I'm doing today that I found it difficult at one point in time? That's how you grow. Step number 3, once you have done that, you build yourself. Building yourself involves mapping your ability to address the new opportunities or threats within your organization, within the country, and leave a stamp mark in whatever you do. And for this, I will give you 5 steps. How do you put your career signature or your individual signature in what you are doing? First one, study the business. Study the opportunities, but map it to your passion or map it to your core value. Whatever is the subjects in the class, whatever is the opportunities in the industry, study that, but not all of it you will be interested, not all of it you will be good, not all of it you will be happy. Map it to your core. Once you have mapped it to your core, create a big entry barrier for yourself. Don't compare yourself with somebody else. Compare yourself with yourself. Do more today than you did yesterday. You must be your biggest competitor. Don't worry about somebody else. If you go to YouTube and you see one of my videos on personal branding, I have put a statement, and that is this: God has created each one of us as a first-class original. Don't die a second-grade copy. The problem with us is we compare ourselves with somebody else. And God is sitting there and laughing. Wait a minute, Anand. I have made you as Anand. Why are you comparing yourself with Rakesh? Why are you comparing yourself with somebody? You are you. You create an entry barrier for yourself. Once you have done that, move towards something, not away from something. You've got a goal in mind. In every organization, they ask you, what do you want to become 5 years from now? Children also, when they apply to a college, they'll ask a particular statement, SOP, statement of purpose. Why do you want this? You need to be very clear and move towards that. Once you move towards that, then the 4th step is network with value adders. So if you've got a desire for chemical engineering, if you've got a desire for numerical analysis, move towards those people who are specialized in that, so that you, who can help you. Don't have what I would call a friend for the sake of a friend. My yardstick is, if I'm spending 5 or 10 minutes with a person,
that must add value to me. Once you have done that, then you need to create your own blue ocean. How do you create your own blue ocean? Take a sheet of paper, and on the x-axis you write value from low to high. And on the y-axis you put cost or effort from low to high. There will be a lot of things that you will have to do. Focus on that which is low in value but high in cost or effort. What should you do with that? Eliminate it. Don't put really eliminate. You can put 3 letters, DOE. Delegate, outsource, and eliminate. Delegate it to somebody else. You don't have to do it yourself. I'll give you a simple example. To prepare all these slides, is it of great value if I myself do it? No, I'll give it to a management trainee. Because it's low in value for me and it's high in cost or effort. But for that person, it is high in value. Wow, I'm doing boss's slides. So learn to delegate, learn to outsource, and then finally eliminate. That which is low in value and low also in cost, reduce the transactions in your life. And that's what everybody preaches. Don't get into clutter, doing everything all the while. Once you have done that, then you go into raising that which the world needs. High in value, but it's also high in cost or effort. The capacity that you have saved here, the headroom that you have saved here, invest it there. Raise it. Make sure that you're doing better than anybody else in that area. Once you have done that, you will be able to create your own distinct identity, which is low in cost or effort, but high in value because you have done meaningfully. After you have done that, you need to invest in yourself. And I want to give you 5 areas which all of us need to invest in ourselves, and those 5 beautifully form the acronym SPICE. The first area that you need to invest in yourself is your spirituality. Get in touch with the Creator. It's very, very important. And I always use the analogy of a device. If a particular device is not functioning, what is the first thing that you do? You refer the manual. If the manual is not helping you fix the problem, give it to the mechanic or give it to the manufacturer. If our body is not functioning well, go to the doctor. But the doctor did not manufacture you. Who is our creator? God. Get in touch with our God. Spirituality. Are you investing yourself in your spirituality? Your God, the God who created you, the God who made you fearfully and wonderfully. Are you in touch with your Creator? The second one, you need to reinvest or reinvent yourself physically. You know, the good book says the body is the temple of the Holy Spirit. We need to take care of our body, not abuse our body. And irrespective of your age, you need to be in good shape. And I want to tell you one thing. Technically speaking, all of us are in good shape, as long as you consider round also as a shape. In the year 2007, I lost 14 kilos in 1 year. 14 kilos in 1 year. That's another session altogether. All that I did is I went back to that principle. I am created fearfully and wonderfully. I am created in God's image. So all that I have to do is go back to factory reset. If I want, I'll give you a simple formula. Aloe vera, amla, jamun, karela, 15 ml every day for 45 days. Cleanse the body, detoxify the body. And I did it. In fact, 14 kilos in 1 year was too much. I had to, except my shoes, nothing else fitted me. I had to change my entire wardrobe. Complete. In fact, I got a compliment in JCPenney's in US while I was shopping because, my waist size was 36. It kept on coming down, 35, 34. And then I was struggling. And so the salesperson, she said, "Sir, can I help you? What are you looking for?" I said, "I'm looking for trousers." She asked, "What is your waist size?" I said, "It is 32. She said, "You're looking for it in the wrong section. You're looking for it in the men's section. Go to the boys section, you will find it."
You need to reinvent yourself physically. And it was very embarrassing. Of course, I could not change the entire wardrobe, so I had the belt. So I was just tightening the belt. And as I was lecturing, the pant was slipping, so I was pulling it up. So one person in the front, he said, Anand, is it not embarrassing for you to keep on doing this? I said, yes. Then why are you doing it? Because it will be more embarrassing if I don't. But I want to tell you one thing. If you don't reinvent yourself physically, it will be very embarrassing. The second area where you need to reinvent yourself. The third area where you need to reinvent yourself is reinvent yourself intellectually. Never stop from learning. Don't think you have graduated. Become a friend of Professor Google. And here you will have to make a resolution. I will be ignorant in my life only once. After that, I'll go and ask Professor Google. I don't know today, but I've got my phone, I'll go and ask Professor Google. I'll be reinventing myself intellectually. But you also need to reinvent yourself in the community. Are you sitting in the armchair general in your air-conditioned office or home, or are you moving with society, finding out what is happening in the real world? Are you giving yourself to common causes? I don't know if people in Delhi at least will know, and I really love this. The Uber CEO himself is driving. How many of you came to know of that? A few of you. Why is he doing it? Because he did not have a job as a CEO? No. Because he has to understand the reality of the traffic, get in touch with the community. Now in Delhi, where I live, the cars are very romantic. They also get physical once in a while, bumper to bumper love. And at that point in time, the owner will come out and they will not speak English, Hindi or Punjabi. They will speak special characters. Asterisk at the rate of hash, exclamation mark. I'm sure some of you understand that language. You need to get in touch with reality. Are you constantly rotating your job? Doing the job of a maid, and COVID gave you that opportunity. Doing the job of dishwashing. Are you doing that? Then you'll understand how difficult it is for that maid, how difficult it is for them. Are you able to get in touch with your community? And more specifically, are you reinvesting yourself emotionally? It's not just your spiritual quotient or your intellectual quotient, but also your emotional quotient. How you respond to pain and pleasure. And here I'll give you a simple example to explain the importance of emotional quotient. A boy was asked by the school, because the school bus did not have the facility that day, they called up the parents and they said, you need to come and pick up your children. Father was busy at the work, most of the time he used to do. That day the mother went. When the mother was picking up the boy from school to home, the boy asked the mother a question, and listen to that question carefully. Mummy, how come idiots appear on the road only when daddy is driving? How come idiots appear on the road only when daddy is driving? Same road, daddy also driving. But mummy, calmness within. Once you have done all that, be yourself. Thank you. Thank you, brother. Your presentation was very practical actually. क्योंकि अभी से ही जो चेंज की शुरुआत होगी वही तो डिवाइन वर्ल्ड में जाएगी ना. सो अभी अपने आप को पहचानना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है. बिहेवियरल स्किल्स को भी जानना और साथ साथ में अपने आप को इंटरनली जानना, अपने आप के साथ इंटरनली कनेक्ट होना और स्पिरिचुअल क्वेश्चन को भी बढ़ाना. तो थैंक यू सो मच ब्रदर. इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू. हमने आज इस सेशन में, इस सत्र में बहुत सारी बातें जानी, जहाँ पर ब्रदर ने हमें अवगत कराया कि हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपने आप को हर जगह एनहांस करने की ज़रूरत है. वहीं ब्रदर मुकुल ने हमें बताया कि स्पिरिचुअली हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें, क्योंकि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा तो हम डिवाइन वर्ल्ड में, यानी कि स्वर्णिम भारत में, वो दैवी दुनिया को फिर से सृष्टि पर ला सकते हैं.
और ये हम सब की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए कोई भी हमें मदद नहीं कर सकता। हम स्वयं की मदद करेंगे तो वो वर्ल्ड भी आएगा और हम स्वयं भी ऊपर उठेंगे। मैं अंबिका दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे दोनों ही गेस्ट को ईश्वरीय सौगात, ओके हो गया है, ओके सो आप सबके लिए ईश्वरीय सौगात एक और है, हाँ, क्योंकि परमात्म प्रसाद किसी भी सौगात से कम नहीं होता है। तो अंबिका दीदी हमारे बीच में है, आदरणीय दीदी हमारे बीच में आएंगे। अंबिका दीदी हमारे बीच में आएंगे, इसको बीच में रख दूँ, और हम सभी के लिए थोड़ा सा प्रसाद जो परमात्मा के घर पर यहाँ पर रहने वाले भाई बहनों ने मिल कर के आप सबके लिए बनाया है, आप उसे स्वीकार करेंगे। साथ में एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग कार्ड है जो परमात्मा की ओर से आपके लिए एक बहुत प्यारी सी दुआ है, आप उसे स्वीकार करेंगे। और उसके पश्चात जो भी उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, जो भाई बहनें 17 तारीख से मेडिटेशन रिट्रीट कार्यक्रम में आए हुए थे वो ज़रा हाथ उठाएंगे। ओके, आप सभी डाइनिंग एरिया में भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हमारे